everyone, so let's move towards our today's topic, which is peptic ulcer disease. Now, what is peptic ulcer disease? Peptic ulcer, basically, what is ulcer? Ulcer is basically the sores which are developed in the stomach. सोर्स उर्दू में क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बड़ी आसान सी चीज़ है. सोर्स उर्दू में कहते हैं गड्ढों को. गड्ढे होते हैं, यू कैन, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो वो जो होते हैं ना, डिप्रेशन आप जिसे कह सकते हो, पिट्स आप इंग्लिश में कह सकते हो, ग्रूव कह सकते हो, ठीक है. एलिवेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पिट्स ज़रूर कह सकते हैं. तो पिट्स फॉर्म हो जाएंगे, खड्डे हो जाएंगे हमारे स्टमक में. सो दैट इज़ कॉल्ड एज peptic ulcer disease. It can occur in stomach, and it also can occur in the duodenum as well. Okay, these sores are developed, and these sores can cause bleeding as well. And obviously, when bleeding will occur in the stomach or in the duodenum, that is very dangerous for our body. Now, the most common cause of the peptic ulcer disease is Helicobacter pylori or NSAIDs, which the abbreviation is like non-steroidal anti-inflammatory drugs. तो इसकी वजह से इन दो वजूहात, ये दो कॉजेज़ हैं पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ के. एंड पेप्टिक अल्सर यूजुअली अकर इन एंट्रम पार्ट और इन द, if it occurs in the stomach, it will usually occurs in the antrum part, and if it is occurring in the duodenum part, so it usually the location will be the first part of the duodenum. That is called as duodenal gastritis. duodenal ulcer अगर duodenum में होगा, और अगर stomach में होगा तो gastric ulcer. And now duodenal ulcer are much more common than the gastric ulcer. And if I talk about the ulcer furthermore, description, that is, it can cause anemia. How? Like I said, जो sores होते हैं, जो पिट्स होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं. अब ब्लड वेसल वहाँ पे रखी हुई है, पड़ी हुई है, सप्लाई कर रही है. अगर वो डैमेज हो गई तो दैट विल कॉज ब्लड ब्लीडिंग इन द स्टमक, इन द duodenum. दैट इज़ वेरी डेंजरस. और वो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड लॉस होगा. दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, एनीमिया भी कहलाएगा ये प्रोसेस. दिस विल ऑल्सो लीड टू वॉमिटिंग एज वेल. ओके, टू डायग्नोज दिस कंडीशन यू कैन डू, the doctors can do gastric biopsy. So this was the topic regarding, this is a very short topic regarding the peptic ulcer, and this is very easy as well. बस आपने इतना याद रखना है कि हमारे स्टमक में HCl की वजह से या हेलिकोबैक्टर, ऑब्वियसली HCl तो बाद में आएगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या जो ड्रग्स हैं, इनकी वजह से हमारी बॉडी में जो म्यूकोजल लेयर है वो डैमेज हो गई, या फिर HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, तो जिसकी वजह से जो स्टमक की लेयर है, स्टमक की वॉल है, उस पर जो है वो सोर्स डेवलप हो जाएंगे. और जब सोर्स डेवलप हो जाएंगे, सो दैट विल कॉज ब्लीडिंग एज वेल, दैट कैन कॉज ब्लीडिंग एज वेल, एंड दैट विल लीड टू अ डेंजरस कंडीशन. सो दिस वॉज द होल टॉपिक. टिल देन, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, and good luck. Take care. Bye bye.